lockdown, a psychological perspective. The college has come a long way since its inception in 1967 and is now seen as a destination where students can embrace their future with hope and confidence. With a team of 124 dedicated teachers and with an efficient cooperation staff of 90 members, the college has been constantly promoting women empowerment and working towards the unprivileged section of the society. The college has been continuously organizing different interactive sessions and webinars in this lockdown period to keep students informed and engaged. Today, with the same aim, the Geo-group of Kalindi College is organizing this webinar at the point of time when an estimated 2.6 billion people, that is one third of the world population, is under some kind of quarantine or lockdown. People who are quarantined are very likely to develop a wide range of psychological distress and stress and disorder. Psychologists all over the world are helping people to combat this situation, and I am extremely honored and feeling immense pleasure to introduce and welcome our esteemed guest of the event, Dr. Aruna Broota ma'am, who is very renowned and well-known psychologist, hypnotherapist, and alchemist. I welcome you, ma'am. Now, I would like to invite Dr. Seema Sahdev ma'am, TIC, Department of Geography, Kalindi College, for inaugural address. Seema ma'am, please. Honorable Chief Guest, Dr. Aruna Broota ma'am, respected Principal Dr. Anjula Bansal ma'am, and all faculty member, my dear students, good afternoon to all present here. I express my gratitude for inaugurating the webinar on the topic Narratives in Lockdown, a Psychological Perspective, being organized by the Department of Geography under the aegis of IQAC of Kalindi College. It is a matter of great honor for me to welcome distinguished psychologist and global consultant and trainer, Dr. Aruna Broota ma'am. Ma'am, we feel delighted to invite you to deliver a webinar for the students of Kalindi College. We are blessed to have you between us. It gives me immense pleasure to welcome our principal, Dr. Anjula Bansal ma'am. I welcome all the faculty members and dear students in this webinar. As we know, COVID-19 is the only one of the many global hazards that threaten our existence. The outlook is grim for millions who live hand to mouth in slum-like conditions. It has forced millions of people to live under strict lockdown conditions. Lockdown can save lives and considered best practices in crisis response. However, depending on the community, sometimes lockdown may produce anxiety and stress because we are concerned about the health of our loved ones. We are concerned about the access to the resources. We always question to ourselves, what will happen next, when and how it will end. As all we know that we do not have just one way to cope up, probably because every individual will have their own strength, own mind, and own needs. It is a health crisis and therefore an effective health response to such a pandemic situation depends on preparedness, our mindset to cope up in such a situation. Students and parents are worried about the uncertainty as they follow daily news. The main objective of this webinar is to imbibe positivity in our students and help them overcome psychological stress. I am sure, ma'am, your ideas, your viewpoint will help us to manage this situation. Your words will surely fill our journey of lockdown with hope and inspiration. At last, I would like to share something. I am very much impressed by the line in the movie that is in Tare Zami Par, every child is special, I also realized that every student is unique with a special talent and with motivation by teachers and parents. All students will surely discover their individual talents. Thank you all. Thank you so much to all. And now I hand over to Prachi. Thank you, ma'am. I am feeling very honored to welcome our dynamic principal ma'am, Dr. Anjula Bansal ma'am, among us.
Ma'am is serving college since last 38 years, firstly as Professor of Commerce and now as our Principal Ma'am. Ma'am has been awarded as Best Teacher in May 2014 by Government of Delhi. She has been always a constant source of support, motivation and guidance for all of us. And I take this opportunity to welcome Ma'am to this welcome address. Ma'am, please. Respected Dr. Aruna Broota, a psychologist, hypnotherapist, all my dear colleagues and students, good evening to all of you. It gives me immense pleasure in welcoming all of you to this webinar on narratives in lockdown, a psychological perspective organized by Dr. Seema Sehdev, Department of Geography, Kalindi College. It is a great honor for me to welcome Dr. Aruna Broota, a great psychologist and hypnotherapist. As the coronavirus pandemic rapidly sweeps across the world, it is inducing a considerable degree of fear, worry, and concern in the population at large and among certain groups in particular, such as older adults, care providers, and people with underlying health conditions. The coronavirus pandemic is a psychological crisis. The enormity of living in isolation, changes in our daily lives, job loss, and financial hardship has the potential to affect the mental health and well being of many. Even in the times of physical distancing, it's critical to seek social support and connection with others. It's also important to know the signs of anxiety, panic attacks, depression, and suicide so you can easily identify them not just among your family, friends, and neighbors, but for yourself also. In order to cope with stress during COVID 19, one can talk with people, friends, and family members of his or her trust, maintain a healthy lifestyle, including proper diet, sleep, exercise, and social contacts with loved ones at home and by email and phone with other family members and friends. Avoid the use of smoking, alcohol, and other drugs to deal with your emotions. Now, our eminent speaker, Dr. Aruna Broota, a great psychologist, will discuss more about the topic. At last, I would like to thank the organizers, Dr. Seema Sehdev and her team for organizing this webinar on such an important topic. I'm sure that this webinar would be a good learning experience for all of us. I convey my best wishes for the success of this webinar. Stay home, stay safe and healthy. Thank you. Thank you so much, ma'am. And we are looking forward. Thank you so much, ma'am. And we are Okay. looking forward to organize many such events under your guidance and leadership. Now, I would like to invite Dr. Vandana K. Rani ma'am, who is from Department of Zoology and core member of IQAC, to formally introduce our esteemed guest, Dr. Aruna Broota ma'am. Vandana ma'am, please. Okay, I'm just able to unmute. It's an immense pleasure to introduce Dr. Aruna Broota.
She's a trained psychologist, acclaimed mental health expert over 4 decades of work expertise. She has numerous scientific research breakthroughs which reflect in her publication. Her regular public counseling over radio, TV, print media, along with successful individual counseling practice, make her a unique, experienced mind muscles personal power expert who, whose vast success experience continue to get better as she help people become happy and better in simple common sense ways. She consistently achieved stellar success across her varied interventions and consultations, with consultation to Cran Energy as employee welfare psychologist, VV Green National Labor Institute, to the International Training Program on Leadership Development for Administration under the aegis of ITEC SCAP scheme of the Ministry of External Affairs, Government of India. She was also advisor WHO supported comprehensive school mental health program expressions based at Child and Adolescent Center, BIMHANS, and many more uh, consultancies in her CVs. But just in keeping in short, as we know, she is a psychologist, hypnotherapist, and alchemist, a person who transforms or creates something through seemingly magical process. So with this, definitely participants now must be eager to listen to her. So I'm just requesting ma'am and inviting ma'am to start her session. Please, ma'am. Namaskar. Thank you for such big words for me, which I am nowhere near them. And sometimes I wonder, how can I thank Dr. Seema Sehdev, because I normally don't like to accept such webinars because I'm not so capable of them. But she just had to ask me once what was there in her voice that I said yes and so readily agreed for it. So it's a delight to be introduced in such a high fashion and high sounding introductions. But let me tell you how I chose this topic. You know, when we were beginning to talk about Corona, nobody took it so seriously. Are, kuch nahi hota. That was a very common narrative coming from everywhere. Kuch nahi hota, aise hi bas, aise hi darai jao. And especially the younger lots, the school going, the college going kids would say, कि शायद आप हमें बांध के रखना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि हम बाहर जाएं. These are some of the narratives that I could hear, very normal, very, sort of revolutionary and not accepting things. But as and when the number rose all over the world, and when Italy and Spain we were listening to, it became scary. It did become scary. And in the meantime, the Pro-Vice Chancellor of Delhi University asked me to join in and be with the helpline, which would be a mental health helpline. And this will be for students, and they could call, would you like to join us? I said, yes, ma'am, why not? So we chose our timings and when people could call. My one always verification is that I don't want to do counseling on audio calls. And this I'll give you a history, because I was on the CBSC 12th class helpline during board exams. And I found that when I did audio sessions, attended to audio calls, there were a lot of prank calls also. People had fun to say, ha, 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 ha. हमने भी फोन किया, with no severity, seriousness, genuinity, what they were experiencing. ये भी एक personality होती है. But I said to the Pro-Vice Chancellor, ma'am, I said, ma'am, under one condition, that I get an SMS that they want to call me and I get a video call.
If it's an iPhone, it could be FaceTime, and if it's an Android, then it could be a WhatsApp video. So she said, "हमें कोई फर्क नहीं पड़ता as long as your services are there," and so we joined in. यहाँ से मुझे ख्याल आया narratives as a a topic. क्यों ख्याल आया? Because I kept getting calls, Dr. Auntie क्या होगा? Professor Auntie क्या होगा? So I said क्या होगा किस बारे में? किस बारे में क्या होगा? ये जो लॉकडाउन हो रहा है इसके बारे में क्या होगा? I said what? नहीं हम बाहर जाना चाहते हैं, नहीं हम यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, नहीं हम कॉलेज जाना चाहते हैं. And the school children, they were happy that it's all off, but they were unhappy after 4 days because they don't want to sit at home. Nobody wants to sit at home. I had narratives before COVID. हाय कब छुट्टी मिलेगी, हाय कब छुट्टी मिलेगी, हाय मैं भी मस्ती मार के सुबह सोए उठूं, हाय मैं भी अपने बच्चों के साथ रहूं, हाय मैं भी कोई स्टोरी बुक पढूं, मैं भी कोई फिक्शन देखूं, मैं भी कोई मूवी देखूं. These were so many narratives pre-COVID. And now when there is a lockdown, you're saying कि मुझे नहीं रहना घर में, क्या मुसीबत है, And I was wondering what a contrast. So I took out 2 analysis to that. Possibly किसी को बांध के रखोगे तो दिक्कत आएगी. And दिक्कत क्यों आएगी? आपने class 1, class 2 में जरूर पढ़ा. Man is a social animal. So you want to be with others. लेकिन अगर छुट्टी दे दो और कहो जाओ, then people will be out and out and out. Maybe rightly so, to their colleges, to their classes. Maybe cut kare, maybe movies dekhe, maybe office going people are going to office, right? And badle mein kya laye? Infection. Because at that time, jab corona ka lockdown bhi hua, nobody believed ki wo infectious hai. Itna infectious. So everybody said, पता नहीं क्या exaggeration है, क्या ये है, क्या वो है. I said, अगर उसकी एक peculiarity देखते हो, तो देखो वो कितना infectious है. But as a psychologist, I am saying, what is the defense mechanism? Denial. नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, right? But if you look at another psychological analysis, and that was my question to everybody. अच्छा घर में आपको लॉकडाउन लग रहा है, ओके, दम घुट रहा है, तंग आ गए हो, जाओ ना, बाहर जाओ. Go out. When you get corona and you are hospitalized, and that is also a lockdown, वो oxygen cylinder और वो respirator, ventilator, वो पसंद होगा? आप तो बस डराते रहते हो. I said, नहीं, that is the choice you have. Go out. A third psychological analysis. You don't love yourself. The government has to tell you, bahar mat jana. You're so desperate to, go out that you're not worried कि honestly अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा. If our government was exaggerating or lying about it, was Spain lying? Was Italy lying? Who was lying? Was France lying? Was London, UK lying? Was New York lying? He too never took it seriously, Trump. He never realized it could be that bad. So he never believed in lockdown. देखो क्या हाल हुआ. तो मुझे जो अलग 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 तरह के नरेटिव्स सुनने को मिलते हैं आज भी, कब खत्म करोगे? क्या है फेज 1 लॉकडाउन, फेज 2 लॉकडाउन, पागल हो गए हो, क्या है? इकोनॉमी का देखो. Are you really bothered about the economy? Are you really bothered about people on daily wages? Then you could have helped in many ways rather than cribbing.
You are bothered कि हमें खुला छोड़ दो और हमें बाहर जाने. That means you don't love yourself. आप पोज करते हो कि I love myself. And when you don't love yourself, it could be because of two reasons. One is low self-esteem. You don't consider yourself to be something. And the other is how you reject your own self. So आप अपने को ही reject करोगे तो दुनिया नहीं आपको reject करेगी. So when I have clients telling me, मुझे उसने रिजेक्ट किया, मुझे उसने रिजेक्ट किया, वो मुझे क्रिटिसाइज करता है, वो मुझे थ्रेट देता है, तो तुम लेते हो तो करता है ना. तो लेते क्यों हो? क्योंकि तुम खुद अपने को रिजेक्ट करते. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. बट आप ये पर्सनल बात नहीं समझना चाहते. आप ये सोचते हो कि अगर साइकोलॉजिस्ट के पास गए तो क्या हम पागल हैं? That is the first narrative that I get from anyone. मैं खिसका हुआ हूँ, मैं हिला हुआ लगता हूँ तुझे, मैं क्यों जाऊं साइकोलॉजिस्ट के पास? अरे बुरे दिन हैं, हाथ दिखाता हूँ ना, राहु केतु पता नहीं क्या हुआ है, शनि चढ़ गया, पता नहीं क्या हुआ है, कोई तो उपाय होगा ना. अच्छा दान दे देता हूँ, अच्छा पूजा करवा लेता हूँ. लेकिन जो असली मुद्दा अंदर है, इन योर चेतन एंड अवचेतन मन, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड, वो आप एड्रेस नहीं करना चाहते क्योंकि आप अपने से डरते हो. जरा सी खांसी जुकाम लगता है, कोई ना कोई सेल्फ मेडिकेशन ले लेते हो, नहीं ठीक होता, डॉक्टर के पास जाते हो, वहां नहीं कतराते. लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरा दिल नहीं लगता, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे धड़कन होती है, मुझे परेशानी होती है, मुझे लगता है कोई मरने वाला है, कोई बुरी खबर आने वाली है, तो मैं कहती हूँ साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ. मैं पागल थोड़ी, सिर्फ घबराहट ही तो होती है, बस थोड़ी सी टेंशन होती है, बस थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, बस थोड़ा सा अटैक आ जाता है एंजाइटी का, थोड़ा सा. तो जब थोड़ी सी खांसी आती है तो एंटीबायोटिक क्यों खाते हो? व्हाई? बिकॉज उसमें कोई आपको छूता नहीं है, उसमें कोई आपके मन की बात पकड़ता नहीं है, कोई आपके अंदर पूछता नहीं है कि क्या चल रहा है. आप डरते हो कहने से कि मुझे अपनी मम्मी से चिढ़ है, मुझे अपने भाई से चिढ़ है, मुझे अपने बॉयफ्रेंड से चिढ़ है, पर मैं फंस गई हूँ, मैं छोड़ नहीं सकती, पर मैं फंस गई. सच में फंसे हुए हो या अपने आप को फंसा के रखे हुए हो? थोड़ा सा सोचो, क्या बोलते हो, क्या सेंटेंसेस यूज करते हो. मैं पॉलिटिकली कुछ नहीं आपको कहती, क्योंकि ना तो मैं किसी पॉलिटिक्स में गई ना आई. आई एम पॉलिटिकल. लेकिन जो गलत है गलत है, जो ठीक है सो ठीक है. मैं बीजेपी को नहीं बिलोंग करती, मैं कांग्रेस को नहीं बिलोंग करती, लेकिन मोदी साहब बेचारे उस दिन पैदा हुए जिस दिन उन्होंने मार खानी है सारी उम्र. लॉकडाउन नहीं करते तो आप गाली देते कि करा नहीं, लॉकडाउन करते हैं तो कहते प्लान नहीं था, बहुत प्रीमेच्योर था, बहुत अर्ली आ गया बाबू, बहुत अर्ली आया तो बचे हुए हो, अभी तो करोड़ों लोग फंसने वाले थे. ये क्रेडिट कोई नहीं देगा. मैं उनका नाम क्यों लाई हूँ? नॉट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि मम्मी पापा की तो आपने सुननी नहीं है, टीचर्स की आपने सुननी नहीं है. हो सकता है किसी गर्लफ्रेंड की सुन लो, किसी बॉयफ्रेंड की सुन लो, पर इतनी अकल सबको होती तो ना. अब नाराज मत होना
कि ये तो डॉक्टर ब्रूटा पीछे पड़ गई हैं, इनको यूथ अच्छा नहीं लगता। अरे क्यों नहीं अच्छा लगता? तुभी से तो हमारा हिंदुस्तान है। मैं तो ये नहीं कहूँगी तुभी से मेरा घर है, तो पूरा हिंदुस्तान ही मेरा घर है। सो हाउ इज इट पॉसिबल दैट आई डोंट वांट यू, आई डोंट लाइक यू? मैं आप में नुक्स नहीं निकाल रही हूँ, मैं आपसे अवेयरनेस की एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अपने को पहचानो, कोविड के फायदे देखो ना। लॉकडाउन हुआ हुआ है, घर में बैठे हो, हाय हाय, ठीक है, बट isn't it nice that you're with your grandmother, your grandfather, your chachu, your tau, your husband, your wife, your brother, your sister, जिनकी शक्ल ही देखनी मुश्किल होती थी। भागते भागते आते थे, भागते भागते जाते थे, टाइम नहीं। This is the narrative that is like गीता का प्रवचन, टाइम नहीं। इसीलिए अब जब टाइम है तो टाइम स्पेंड करना नहीं आता। That is very important to understand. दुहाई देते थे खाली बैठाओ, खाली बैठाओ, लेकिन जब खाली बैठने को आए तो खाली बैठना ही नहीं आया, भागना आया। वहां पहुंचना है, वहां पहुंचना है, ट्यूटोरियल है, प्रीसेप्टोरियल है, इंटरनल असेसमेंट की असाइनमेंट है, क्लासेस है। तो ये टीचर कभी एब्सेंट नहीं होती, क्लास ही क्लास लेती रहती है। बट उसकी आदत पड़ गई थी क्लास में बैठना और मेंटली एब्सेंट हो जाना, एक दूसरे से मजाक करना, टीचर का नाम रखना, टीचर के ऊपर जोक्स बनाने। ये भी ब्यूटीफुल है, मैं आपको कंडेम नहीं करूंगी, पर जो ये भी नहीं करते तो वो तो एक बुझे हुए आदमी की तरह है ना अंदर। यू नॉट बबलिंग इनसाइड ऑफ यू, बबल करना सीखो ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई विल ऑल्सो से हम इतने बुझे हुए नॉन अचीवर्स एज गर्ल्स क्यों हैं? हर वक्त हमारे पेरेंट्स अगर वो सुन रहे हैं, आई एम श्योर टीचर्स आर ऑल्सो पेरेंट्स, I know you're more, I know you're young, I know you belong to the newer generation teachers, but kahin na kahin there is a racial unconscious in us that tells us she is a girl, she has to get married. तो प्रोफेशन छोड़ देगी, तो नहीं इसको खाना बनाना आना चाहिए, घर का कोई काम नहीं करती। और वो जो बेटा है वो, उसको भी तो बोलो ना, क्यों नहीं बोलते? वेयर इज इट रिटन कि वो मिक्सी में मैंगो शेक नहीं बना सकता और अपनी बहन को पिला सकता? क्यों नहीं? माइंड यू, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मीटिंग के बाद घर गई, ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं फॉर 12th एंड शी स्कूल्स हर डॉटर। तुझे इतना भी नहीं हुआ कि भाई को मिल्क शेक बना देती? उस वक्त से वो पढ़ रहा है, भूखा है, सेम क्लास, इकट्ठे पढ़ रहे हैं, सेम सब्जेक्ट्स, कोई ये नहीं है कि सब्जेक्ट अलग अलग ले लिया हो। व्हाई द गर्ल? अभी 2020 में ऐसा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं मैं वापस आ गई 30-20 में, अब तब भी ऐसा ही कर रहे होगे। कहीं एक जगह चंद्रयान की तैयारी हो रही होगी और कहीं एक जगह लेडी लगी हुई है सुबह उठ के बेड कवर लगाने, किचन क्लियर करने। एंड द प्रोफेसर हस्बैंड टेल्स मी, वो लेडी कोलीग कहाँ है, मीटिंग में क्यों नहीं आई? मैंने कहा सर उसका बेटा है 106 बुखार से, फोन आया, वो घर वापस चली गई। वो उतनी ही सैलरी लेती है जितनी मैं लेता हूँ। बड़े हैं, मैं जवाब नहीं दिया, क्या फायदा। प्लस मैं उस जमाने की हूँ, जवाब नहीं देती, बट डोंट थिंक कि मुझे समझ में नहीं आता।
यहीं से पता चलता है कि आप अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं और आप अपनी पत्नी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं. Whether she is a professor, or whether she is a lecturer, or whether she is a CA, or she is a CS, or she is a hotelier, or whatever be the profession. So psychological analysis में मैं मौका ढूंढती रहती हूँ लड़कियों से बात करने का. कोई ऊंचा बोले डरो नहीं, कोई डांटे, अगर गलती करी है सॉरी बोल दो, अपोलोजाइज करो, करेक्ट योर बिहेवियर. लेकिन कहीं का गुस्सा अगर आप पर निकल रहा है, प्यार से, आउटबर्स्ट से नहीं, कह दीजिए. आपका मन है ऊंचा और गड़बड़ बोलने का तो ठीक है, बट मैंने कुछ नहीं किया. इतनी जबान आप में होनी चाहिए. ये जो यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन हम चला रहे हैं, यहाँ से फोन आते हैं, मैम मैं घर में रहती हूँ सोचकर कि एक तो मैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर लूँ, प्लस मैं अपनी असाइनमेंट्स पूरी कर लूँ, लेकिन दादी है कहती हैं एक पराठा बना दे, मम्मी है तो कहती हैं किचन संगवा दे, भाई को कुछ नहीं देती. तो मैं थक जाती हूँ, तो मेरा मन नहीं करता करने. एंड आई से हर जेंडर की अपनी खासियतें हैं. आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स हाउसहोल्ड वर्क इज नेगेटिव. मैं क्यों करूं, मेरे से नहीं होता. माँ नौकर तो नहीं है, माँ बॉन्डेड लेबर तो नहीं है, माँ करती है ना. कुछ गलत करती होगी, लेकिन ज्यादातर माँ भी तो करती है विद हर जॉब. वो थकती होगी. Why don't you look at your mother? Why don't you look at your dad? Even if you don't look at your brother, look at your mother. How much work does she do? You think वो किसी की लाडली बच्ची नहीं थी? उसको क्या हम गटर से उठा के लाए? उसके हड्डी मांस नहीं है, उसको दर्द नहीं होता, वो थकती नहीं है. लॉकडाउन है तो फायदा उठाओ, थोड़ा सा घर का काम करके टाइम मैनेजमेंट सीखो. बैठ जाओ पढ़ने, किसने मना किया? कुछ बात पे मना कर दो, पढ़ रहे हो ठहर के कर दूंगी, पर कर देना. इसलिए नहीं कि टाल मटोल कर. हाँ आती हूँ और गाने सुन रहे हो, टीवी देख रहे हो. मदर का दिल नहीं करता टीवी देखने का. एंड अगर भाई नहीं करता, are you going to compete with him? Compete with your own self. मैं कई बार, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, और मैं ओपनली एडमिट करना चाहती हूँ, मैं कई बार अपने हस्बैंड को कहती हूँ जो मैं अचीव करना चाहती थी वो मैं नहीं कर पाई. And he laughs it off by saying, तेरी फ्रेंड्स कहाँ हैं? What have they achieved? I said they were never my competitors, never. I was my own competitor. So वो आग, वो चिराग, वो ज्वाला कुछ करने की, वो आपके अंदर होनी चाहिए. ये नहीं कि वो बीमार था इसलिए मैंने नहीं किया. लेट हो सकते हो इन लाइफ. I have also gone through all those family responsibilities. मैं लेट हूँ, पर रुकी नहीं. तो आप क्यों रुक रहे हैं? मैंने तो नहीं कहा नेल पॉलिश मत लगाओ, मैंने नहीं कहा कि मैचिंग कपड़े मत पहनो, मैंने नहीं कहा बालों में तेल लगाओ, मैंने नहीं कहा जूड़ा लगाओ. मैंने कहा है मॉड रहो अपने ज़माने से, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करो. अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट का ये नैरेटिव है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, तो कोविड एंड लॉकडाउन, not COVID, but lockdown is a blessing.
शुक्र है कहीं जाना नहीं, कहीं पोल्यूशन में नहीं, कहीं धक्के नहीं, कहीं मेट्रो नहीं, कहीं डीटीसी नहीं। ओ गॉड, खाओ, घर में वॉक करो, प्राणायाम करो और फिर अपनी किताबों में लगो। वो किताबें जो आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम करियर बिल्डिंग है। फिक्शन तो सारी उम्र पढ़ते रहोगे, जो करियर बिल्डिंग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तंग आ जाओ ना तो कोई जना बीच में टोक दे। अगर ये सोच रहे हो कि मैं भी आपकी मदर की तरह आपको नसीहत दे रही हूँ, सॉरी, मैं कोई नसीहत नहीं दे रही। आई हेट डूइंग दैट। आई विल ओनली से अपने अंदर झांक के देखो, मैं क्या हूँ, क्या मैं ऐसी ही रहूं, मुझे कुछ बेहतर करना है, मुझे कॉन्फ्लिक्ट है, ये करूं कि वो करूं। तो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आके एप्टीट्यूड टेस्ट करवा लो और 3-4 सेशंस काउंसलिंग के ले लो। मैं अपना प्रचार नहीं कर रही, आई एम नॉट द ओनली साइकोलॉजिस्ट। मैं कितने देख लूंगी, एंड दिस थिंग इज नॉट डन ऑन वीडियो। You have to come personally, take the tests, have an interview with a psychologist, see what tests are required. Why are you in a conflict? क्या आपकी personality है जो decision making नहीं ले सकती? क्या आप डरती हैं, घबराती हैं डिसीजन लेने से कि अगर सक्सेस नहीं मिली तो सब टोकेंगे? देखा, तूने कहा था कि तू ये बनना चाहती है, तू ले ले मजा। अगर कोई ऐसे बोलता है, कोई जरूरत नहीं है सुनने, पर अपना डिसीजन सोच समझ के सहजता से लेना है, इमोशनल होके नहीं कि क्या करियर लेना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अंदर झांकोगे तब ना, किसी के पास जाओगे डिस्कस करने अपनी पर्सनालिटी, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स, अपने ट्रॉमास इन चाइल्डहुड, तो आपके नैरेटिव्स जो हैं वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आने लग जाएंगे। उसमें फिर आपको मोटिवेशन होगी कि आप टाइम मैनेजमेंट करोगे अपना। एंड मेरा लास्ट पॉइंट, सक्सेस बिना बॉडी वर्क के नहीं आ सकती। माइंड इज रिलेटेड टू द बॉडी एंड बॉडी इज रिलेटेड टू द माइंड। अगर आप माइंड बॉडी सोल का समन्वय, बैलेंस चाहते हैं, तो बॉडी वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। What does that entail? That entails a walk. अब हमारे दादाजी तो कहते थे 4:30 बजे सुबह उठो, सैर करने जाओ, तो बड़ा गुस्सा आता था, right? Till the Americans came, put the walk into the lab and said, see, ideally you should be walking for 1 hour. But say मेरे जैसे लोग who can't walk because of my spine for 1 hour, well, I can say Americans will tell you the threshold. If you walk twice a day, each time for a minimum period of 35 minutes, मुझे मत कहना लॉकडाउन है, ये सब बहानेबाजी है, कमरे में वॉक कर सकते हो। मैं करती हूँ, मैं घड़ी देख लेती हूँ, बस that's it. तो 35 minutes minimum if you walk, your body will start generating by itself a biochemical called endorphins. And these endorphins in your language and my language are the happy hormones. So happy hormones का ये नहीं मतलब कि आप वॉक करोगे तो हंसना शुरू कर दोगे, नहीं। आप वॉक करोगे तो आप में हैप्पी फीलिंग्स का अर्थ है, मतलब है कि आप में कॉन्फिडेंस आएगा टू डू समथिंग, टू वर्क मोर, to study more,
to ambition more, even to work in the house. You will do it with positivity. Kya reason? The blood gushes into the brain, so your circulatory processes are improved and negativity gets converted into positivity. Studies हैं, देख लो, ये मैं मन घड़न बात नहीं कर रही हूँ आपसे, मानो मेरी बात. वॉक के बाद प्राणायाम एक टाइम, दूसरी टाइम स्टेशनरी जॉगिंग, जंपिंग जैक्स, कार्डियोवैस्कुलर एक्सेलरेशन होती है इससे. Again, you are fatiguing the body and stimulating the mind. कई लोग कहते हैं, ओह डॉक्टर ब्रूटा ने कहा चलो चलो सैर करो, चलो 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 चलो, and the very next day say, छोड़ो यार, आज थके हुए हैं, कल जाएंगे, and the कल never comes. Okay, so आप अगर किसी दिन बहुत थके हुए भी हो, वॉक पे जाओगे, you will feel better, you will feel rejuvenated, recharged. अच्छा, बोलती तो मैं बहुत हूँ, मैं 2 घंटे और भी बोल दूंगी. नहीं, आप तंग आ जाओगे, फिर आप बोलोगे ओए होए बहुत बोलती है. आप पूछो कोई सवाल, मैं फिर शुरू हो जाऊंगी. या लेट मी थैंक Dr. Saidev for taking the initiative. Let me also thank the principal for agreeing to give me this opportunity. Let me thank you people, the students who've put in this effort to organize. And let me thank all the students of Kalindi College कि इतनी पेशेंस रख के सुन रहे हो मुझे. कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता आज के ज़माने में. आज के ज़माने में आपको टेलीफोन चाहिए, टक 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 करना चाहिए, पबजी खेलना है, कोई और गेम खेलनी है, and you become addict to it. टाइम मैनेजमेंट करो. दूसरी बात, जो ये हर समय यहाँ आप लगाते हो एयरफोन्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सोचो आप अपने ears को क्या कर रहे हो. Agreed? सोचना, जबरदस्ती नहीं है, जो कह रही हूँ एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके कह रही हूँ. बहुत रिसर्च है इस एरिया में, ट्राई करो and you will be one of the best. Take care. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am, for such an informative and enlightening session. I am really feeling honored and blessed that I got opportunity to hear you, and you have truly filled my mind and heart with Aag, Chirag, and Jwala to excel. Ma'am, now it's time for question and answer session, and I would like to invite Dr. Vandana Kirani, ma'am, to conduct the session. Vandana, ma'am, please. Yeah, sure. Thank you, ma'am, for your wonderful lecture. And there are several questions I got. I just narrowed down. Like the first question is from Dr. M. Santi, and he or she, I don't know, she want to ask like how to help the students whose household income has come to zero. For a few, I can help to pay the fee, but not for many. So what they can do, or he or she can do for that? Ma'am, it's a very big concern. I mean, I'm not going to deny this is a hardcore reality. Lot of people have reduced their income and EMIs सबके पास हैं. आजकल हमारा living style ही ऐसा बन गया है कि we are all on EMIs. And if you say I can have help some, yeah, even they said like I can help. बड़ी बात है. If you can help one, someone else can help another one. Someone else can help another one. So somewhere we are contributing. जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा
ना हो और आपको गिल्ट हो रहा है कि मैं लंगर नहीं लगा सका, लंगर लगाने की जरूरत नहीं है। इनकम सबकी कम हुई है, नो डाउट, बट आई विल से whatever you can manage, go slow on managing. बट आपको पता है कि RBI ने अभी मॉरेटोरियम तो रिकमेंड किया है, एंड आई होप one of these days for another 3 months there may be a moratorium, so 6 months का अगर रिलीफ मिल जाए, लेकिन 3 months का तो आपके पास मॉरेटोरियम है for EMIs, so you could be benefiting from there. Okay. The next question is, मन में नकारात्मकता आ जाए तो क्या करना चाहिए? मैंने सारी बात ही नकारात्मक को ओवरकम करने की एंड मेरे बच्चों, नकारात्मक तब आती है नेगेटिविटी जब हम अपने पे विश्वास नहीं करते और दूसरों पे विश्वास करते हैं। कैसे? एक नैरेटिव जो बार बार मुझे फोन कॉल्स करके आता है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं क्या करूँ जिससे कि मैं अच्छा या अच्छी बन जाऊं। और जब आप अपने को अच्छा ही नहीं समझते तो कुछ भी अच्छा करोगे आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट हैज टू बी पॉजिटिव। सो नेगेटिव थॉट्स को कम करने के लिए 2 लेवल की बातें कीजिए। एक जो मैंने बॉडी वर्क बोला, और दूसरा जब नेगेटिव थॉट आए बोलो, डॉक्टर बूटा ने कहा था ये थॉट नहीं है, चलो निकालो इसको और कुछ लिख लो। क्या लिखना है? जिसे आज के जमाने में आप जर्नल कहते हो, मैं कहती हूँ डायरी लिखो। जो थॉट्स हैं उसको ओवर दो, लिखते जाओ। नेक्स्ट डे उसको फिर से पढ़ो, पढ़ना जरूर है। फिर कोई थॉट आए उसको लिखो, फिर उसको पढ़ो। 1 महीने बाद आप सोचोगे बस और नहीं, मैं नहीं कहूंगी और नहीं, मैं नहीं थकूंगी, लेकिन आप थक जाएंगी अपनी नेगेटिविटी के साथ और पॉजिटिव धीरे धीरे होने लगेंगे। Thank you, ma'am. Another question from Purvi Gupta, and she want to ask like how to save myself and my cousins' mental health from toxic fights between the elderlies, like the person in the families, like mother, father, or any elder, like they are fighting in the household. आजकल माय गॉड, आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रखा है। आजकल ऐसी टेलीफोन कॉल्स आते हैं मुझे, और ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनको मैं इस समय वीडियो काउंसलिंग दे रही हूँ कि मुझे पैनिक हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, एंड मैं ऐसी बातें, अच्छा फिजिकल वर्कआउट करो, अच्छा मेंटल वर्कआउट करो, लेकिन साथ साथ मैं चाइल्डहुड एक्सप्लोर करती हूँ। एंड चाइल्डहुड एक्सप्लोर करने से मुझे पता चलता है कि पेरेंटल डिस्कॉर्ड इतना जबरदस्त रहा, मारा पीटी, चीखा झाड़ी, निकल जा, दुष्ट, ये वो, कि बच्चे डर जाते हैं। मम्मी चली गई तो हमारा क्या होगा, पापा चले गए तो कौन कमा के लाएगा, and that anxiety gets translated into a bigger size. तो कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है, even when you are an adult. So I think कि आपको अपने मन का एनालिसिस और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी, साइको एनालिटिक्स स्कूल, जो भी मतलब साइकोलॉजिस्ट आप चुने, तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आर very strong images that influence your today's personality, how you are going to deal with the outer world, with your relationships, वो improve होने चाहिए, because without interpersonal relationships ना घर में आपको चैन मिलेगा, ना ऑफिस में, आपकी किसी के साथ पटेगी नहीं। Try. Yeah, thank you, ma'am. Another question, I think most common because 2 or 3 persons have asked, like how to curtail domestic violence in India. As per statistics, like there are 92,000 cases during pandemic. So please comment. अभी तो ये रिपोर्टेड केसेस है वंदना मैम,
और क्या पता इससे ज्यादा हो, क्योंकि मैन वुमन रिलेशनशिप में इक्वालिटी नहीं है, ना सिविल सेंस है, ये एक हायरार्किकल रिलेशनशिप है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, बिहेवियर पैथोलॉजी बहुत ज्यादा है। इफ यू हैव alcoholic father, an alcoholic chachu, an alcoholic devar, a drug user, sexual abuser in the house, इस तरह से बहुत तरह तरह के वायलेंट बिहेवियर्स हैं घर पे। डिपेंड करता है हाउ यू आर डिफाइनिंग व्हाट इज वायलेंस, राइट। लेकिन दुख जो मुझे होता है वंदना मैम, वो ये है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। मर्दों को हर वक्त हम लोग दोष देते हैं, मैं नहीं देती। मैं कहती हूँ ओहो बेचारे, इंसान बनते बनते मर्द ही रह गए एवोल्यूशन में। लेकिन औरतें जो इतनी डेवलप्ड हैं, इतनी रिजिलियंट हैं, इतनी पेशेंस है। लुक एट द सास बहू रिलेशनशिप, look at the Nand Bhabhi relationship, look at the two sisters only, you know, falling in jealousy and expressing violence and abusing each other, and I mean, ये तो बहुत ही बुरी बात है। So how can we, oh God, it's a big process, but we are all contributors to that process. So मैं भड़काऊंगी तो नहीं अपने स्टूडेंट्स को। मैं ये जरूर कहूंगी, never take an abuse, at least give back an answer. And if someone gives you a physical abuse, immediately report the matter. ये मत सोचना घर की इज्जत खराब होती है क्योंकि आप शह दे रहे हैं, and immediately consult a psychologist on that, because जो physical abuse है, it's a psychological and a psychiatric problem. Okay. The next question is like hard to identify. That's like people don't know whether they are having stress or not. So the question is related to that only. Hard to identify what I am stressed about and how important it is really. So what can be done regarding this? Ma'am, सबसे पहले stress is these days a very commonly used and abused word. We don't even understand whether there is stress. I couldn't hear that. कोई बीच में बोल रहे थे? वंदना मैम कुछ था? नहीं, I think some backgrounds in someone's like किसी का on हो गया होगा. Okay, all right. तो stress word जो है पहले उसको understand करें. How do we define stress? I think any situation that tries to attack your well-being, your adequacy, I will call it stress, right? So stress तो financial stress है, social stress है, romantic stress है, existential stress है, बहुत तरह तरह के stresses हैं। and sources आज के दुनिया में तो pollution भी source है, and environmental influences, demands from the social environment, बच्चों को बड़ा करना, हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग, आपके जॉब में एक्सीलेंस क्रिएट करना, सो बहुत सारे स्ट्रेस हैं लाइफ में। अब उसको ओवरकम कैसे करना है? आई थिंक देयर इज नो एंटीबायोटिक फॉर दैट, बट व्हाट आई विल से इज कि अगर आप प्राणायाम और शवासन करती हैं, और अगर आप अपनी वॉक रखती हैं, अगर आप अपनी टाइम मैनेजमेंट करती हैं, पर मैंने एक चीज जो अभी तक बात ही नहीं करी जिस पे वो मैं बीच में ले आती हूँ, अगर आपका फूड ठीक है, जैसे अब मैं आपको बताऊं कि फूड इज अ वेरी बिग बैलेंसर बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड। 2020 में भी आप सोचते हो फूड इज ओनली फॉर फिजिकल हेल्थ, बट आपको ये नहीं पता कि ईश्वर जी जो फूड देते हैं वो मेंटल हेल्थ के लिए देते हैं, राइट?
For example, कि आपने कहा ये खाना मत खाइयो, इसमें कार्ब्स है, मोटी हो जाएगी, right? ये खाना खा ले, हाई प्रोटीन है, तेरे में एनर्जी आ जाएगी. But you're not thinking of the mind. So there are a lot of studies that show excess of maida. Okay. Yeah. It slows down brain functioning, brain processing, and a good meal that has good roughage, good fiber, makes you cognitive, clears your abstract thinking, makes you very realistic, and your information processing in the brain, the speed is enhanced. Now, hard and fast rule nahi hai. These are some of the findings that throw light. So all those people who are taking a lot of fried food, Yeah, nowadays. उनका भी brain process slow down कर जाएगा. ये रिसर्च स्टडीज बोल रही हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गर्मी सर्दी ड्राई फ्रूट लेते हैं in small quantity at one time, in the morning or in the afternoon or in the evening, it is a mental energy food. This is very important to understand. So, have you noticed कि लोग कहते हैं कि जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ या होता हूँ तो मैं सारा फ्रिज खा जाता हूँ. That's a That common. means when you are in anxiety, you eat more. And some personalities, when in anxiety, stop eating. So there are all kinds of extreme reactions when you are in stress. So stress तो होगा. मैं तो नहीं कहूँगी कि stress ही नहीं है. I wonder if there's anyone who's without stress. I'm sure even a snake has stress, you know, whatever. But what I'm trying to tell you is that you can fight the stress if you are leading a balanced life. That means your time management and food management and study management is intact. When you're sensitive to the need of your mother, your mind is intact and you will be able to fight stress better. When you make financial adjustments by looking at the total income and breaking it in reality to different spheres of life, and then say, can I pay the EMI? The stress is reduced. When you are looking for a promotion, you have to find out whether your interpersonal relationships, the delivery of your work in time, is it okay, or is it that you don't have any rapport with anyone and you say, मेरे से किसी से, you know, कुछ नहीं होती. No, you're not doing buttering, you're not doing kuch, but you are doing a balancing interpersonal relationship. So संतुलन, balance बनाइए, stress को fight करना थोड़ा सा better हो जाएगा. गाड़ी तेज चलाकर stress नहीं निकलेगा. Okay, that's one of the complete psychological question I can say from that itself. What are the signs of depression? Ma'am, depression is a very, आजकल it's a very loose term. जैसे सब बोलते हैं कि मुझे डिप्रेशन है. किस बात का डिप्रेशन है कुछ पता नहीं है. डिप्रेशन होता क्या है पता नहीं है. Ma'am, depression is technically very many kinds. It's like this, that when I go and tell a doctor कि मुझे heart attack हुआ था, वो immediately कहेगा वो क्या होता है मुझे नहीं पता. Symptoms बता तेरे को क्या हुआ. ठंडा पसीना आया था, दिल की धड़कन बढ़ गई थी, या दिल ही रुक गया था. There are different kinds of heart attacks, right? इसी तरह depression में there are many types of depressions that one can have. लेकिन एक बहुत general तरीके से मैं आपको बताऊं, मन उदास रहना, कहीं दिल ना लगना, किसी से बात करने का दिल ना करना, किसी से चिढ़ के बोलना, गुस्सा जल्दी आना, चीजें फेंकना, रूड लेना, बोलना, गाली देना. These are all signs and symptoms of different types of depression.
डिप्रेशन. कभी मूड स्विंग होता है, आप बहुत उदास हो जाते हैं, और कभी आप बहुत खुश हो जाते हैं. दिस इज अनदर काइंड ऑफ अ डिप्रेशन. लेकिन अगर फैमिली में किसी को है तो ध्यान रखिएगा, ये जेनेटिक भी हो सकता है और एनवायरमेंटल तो होता ही है. सो आई थिंक कि हमें बैलेंस बनाना है बिटवीन बॉडी एंड माइंड. इससे डिप्रेशन कम होता है. चांस मत लेना, साइकोलॉजिस्ट को जरूर देखना. फिर एंड में मैं कह रही हूँ, आई एम वाइंडिंग अप, मैं अपना प्रचार नहीं कर रही, मैं कितनों को देख लूंगी. मैं सब्जेक्ट की अहमियत आपकी जिंदगी में क्या है, मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, आपकी जिंदगी में क्या अहमियत है साइकोलॉजी की, उसको समझो, पहचानो, और ये ट्रेंड छोड़ो कि मैं कोई पागल हूँ. Don't do that, and you will benefit, you will become more efficient, and you will become more practical in life. Yeah? More sorted, more resolved. Take care, and that's the end of it. Thank you for everything. Thank you very much. Thank you so much, ma'am, for a wonderful session. Thank you. Now I would like to invite Seema Sadeep ma'am to comment on the complete session. Thank you so much, Dr. Aruna Broota ma'am, for answering all questions so patiently. It will really help us all a lot. Especially your narrative to believe upon yourself really motivated me and reminded me about the lines said by Louis L. Hay that you have been criticizing yourself for years and it hasn't worked. Try appreciating yourself and see what happens next. Thanks a lot, ma'am. I would also like to thank Dr. Vanna K. Rani ma'am for conducting this session. Now, I would like to invite Surbhi, Proctor of Geo-group, to present a recapitulation of today's seminar. Surbhi? A very good afternoon to everyone assembled here. First and foremost, on behalf of our college, I would like to thank our honorable guest for today, Dr. Aruna Broota ma'am, who spared time from her busy schedule to grace the occasion. Ma'am, the session was very informative and all of us learned a lot through your perspective. We all are inspired by your great words. Ma'am, your views on the self-esteem need to accept the realities, self-realization, a strong decision-making, and to see the positive sides of the lockdown are very valuable. Ma'am, your views regarding the role of women in our society was very impressive. We learned about the importance of body work to generate happy hormones in our body, which will bring positivity in our life. Thank you again, ma'am, for enlightening us with your knowledge. It was a great experience and a golden opportunity to listen to you. I thank our respected principal, Dr. Angela Bansal, for her encouragement and support. My heartfelt thanks to our TIC, Department of Geography, Dr. Seema Sadev ma'am, for her guidance and encouragement in all our efforts. I thank all the faculty members for their presence and their valuable contribution. Last but not the least, thank you to all the students for their participation. We hope that you found this session informative. Again, I thank you all for joining us and making this webinar a great success. Thank you a lot for your cooperation. Thank you. Thank you, Surbhi. I think I would also like to thank Principal Ma'am. Thank you very much. Raji, start. और हमें बहुत ही अच्छा लगा. It adds to my knowledge also. और हम दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे दोबारा बुलाने के लिए. तो आप थोड़ा सा टाइम कालिंदी कॉलेज के लिए स्पेयर करके रखिएगा. Thank you so much. Thank you. Good evening all. Good evening all. I think now I formally thank Dr. Aruna Broota. Good evening all. On behalf of IQSC and Department of Geography, Kalindi College,
I thank you, our honorable guest speaker, Dr. Aruna Broota, psychologist and hypnotherapist, for very convincing and comprehensive presentation. We all are enlightened with their knowledge, ma'am. We are thankful to our principal, ma'am, also for her motivation and support. Special thanks to Dr. Seema Sahdev for all the hosting this webinar, and her team also. Thank you to Vandana, and heartfelt thanks to all the participants. Last but not the least, मैं दो lines कहना चाहती हूँ. Broota ma'am, I think she left. जिंदगी को आसान नहीं. Time there. मैं आपको सुन रही हूँ. ओके मैम, मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस, काफी चीजों के बारे में बोला. उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि इस समय शायद वाकई में सबके पास टाइम बहुत है, लेकिन टाइम को कैसे मैनेज करना है उसका तरीका नहीं पता है. तो जिंदगी को आसान नहीं, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है. सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है. शायद ये वो टाइम है कि हमें वो सही समय ढूंढने की जरूरत है. वो टाइम हमें मिल गया है, लेकिन वो एक्टिविटीज ढूंढने की जरूरत है जिससे हम इस समय को सही बना सकते हैं. थैंक यू टू ऑल. वेरी warm thankful. I'm with all the warm words. We have to end today's webinar. Thank you to all.